So Arush, now we have questions based on geometry of complex numbers. So let us take this first question. So they are saying two lines a bar z plus a z bar plus c equal to 0 and b bar z plus b z bar plus d equal to 0, where a and b are complex numbers, c and d are real numbers. Okay, so c and d are just random numbers and a and b will be in terms of I. So these are equation of lines in the complex plane. जैसे straight line होता था y minus y1 equal to m into x minus x1, वैसे यहाँ पे ये लोगों ने दो equations दी है हाँ and they are saying these lines are parallel if ab bar is equal to a bar b. This bar by the way means conjugate, जो अपना basic definition है conjugate, that is the same thing. So see we have a bar z plus a z bar plus c equal to 0. यहाँ पे एक assumption लेते हैं आरुष, let z is equal to x plus iy. I Y yeah So a bar into z है तो z is x plus iy प्लस a into z bar है, z bar is x minus iy plus c equal to 0. Let us simplify this Arush. तो यहाँ पे हम see we'll convert this into a standard form of an equation of straight line. What is the standard form hmm. of equation of straight line? That we first have x वाला term, then we have y वाला Hmm. term and then we Y have was the term constant term. अब यहाँ const पे x yes वाले दो टर्म्स है तो x जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा a बार प्लस a. A bar plus C अब y जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में इनफैक्ट y के साथ मैं i भी कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट हाँ में आएगा a बार माइनस a हाँ and we have plus c equal to 0. This is the first equation. देखिए समझा. yes sir And now we have to do the same thing with the second equation. तो जो second hmm. equation है, in that we have b bar z plus bz bar plus t equal to 0. So b bar into हाँ z is x plus iy plus b into z bar is x minus iy plus d equal to 0. तो अब यहाँ पे आरुष x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा b बार प्लस बी hmm. एंड y कॉमन लेंगे तो आई y कॉमन ले लेते हैं, वी विल गेट b बार I माइनस बी प्लस डी yeah इक्वल टू 0. hmm. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. And they have said the lines are parallel, Arush. What do we know about parallel lines? So we know that for parallel lines, slopes are equal. slopes are equal yes And here when we talk about slopes, तो slope का एक direct formula था. Do you remember how to find slope of line when equation is already given to us? yes sir तो बताओ. सर इधर का स्लोप होएगा a bar plus sorry हाँ a bar plus a upon I into a bar minus नहीं, आई यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. सो स्लोप विल बी नेगेटिव अच्छा ऑफ ए बार प्लस ए अपॉन ए बार माइनस ए. हाँ It's basically minus a by b if you remember the formula. yes yes And for the second one, it will be negative of b bar plus b upon b bar minus b. Are you following this? yes sir अब उसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है आरुष एंड वी विल लैंड एट दिस. तो चलो करते हैं, माइनस माइनस कट हो जाएगा पहले. नाउ हाँ मल्टीप्लाई. तो a बार a इंटू bar b b बार bar माइनस minus a bar a b बार इंटू b, a बार इंटू b या प्लस a bar a into b b माइनस a सॉरी a b बार माइनस a b. b yeah नेक्स्ट इज a बार b बार a bar b bar प्लस a बार इंटू b plus a bar b माइनस a इंटू minus b बार a b bar माइनस a b. plus c अब बहुत कुछ कट होगा. सो a बार b बार इज गेटिंग कट, हाँ minus minus a b ab is minus getting cut. A bar b, a bar b, when we take it on the same side it will become 2 a bar b 2 a bar b is and equal this will to become 2 2 a b ab bar.
तो हो गया डन, a बार b इज इक्वल टू ab बार। Yeah. अब तो A सेकंड bar वाला है is ना, हाँ तो ये हाँ तो तू लिख रहा है, एंड सेकंड वाला जो है इसका मैं ओरली बता देता हूँ, बिकॉज नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, एंड इफ यू रियलाइज हाँ दिस द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। सो ओवर हियर ये जो स्लोप्स है, दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट, स्लोप ऑफ सेकंड, द रूल फॉर परपेंडिकुलर इज m1 into m2 perpendicular is into -1। yes तो वो सॉल्व करके आ जाएगा, यू गेट दैट, हाँ राइट दिस। yes So the third one, Arush, Z1, Z2 are two complex numbers. Then the straight line through Z1 and Z2. So ऐसा एक straight line है, Z1, Z2, and they are saying that the equation of that will be this: imaginary part of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equal to K. So see, first of all, हाँ Z represents any random point on this line. Okay, so like yeah for example, Z is this point. Now, do you hmm. realize that Z, Z1, Z2 are collinear points? Hmm. So the angle between Z and Z1 and the angle between Z1 Z2, ये जो angle होगा दोनों का, that angle हाँ has to be 0 degree. yeah Okay. So how do we find angle between complex numbers? If I ask you to find angle between this Z minus Z1 upon Z2 minus Z1, because they have given this, I am taking this Z minus Z1 upon Z2 minus Z1. If I ask you to find the angle between this, तो एंगल के लिए हम ये करेंगे, इफ यू रिमेंबर tan इनवर्स ऑफ b by a अपना फॉर्मूला होता है, yeah and what is b and what is a? So b is imaginary part of hmm. that complex number z, and this is the real part of that The complex real number z, part बराबर है। बट इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन आरुष, तो एंगल क्या होगा? एंगल तो 0 डिग्री होगा, right and if it is 0 degree, do you realize that this has to be 0? Imaginary part of z upon real part of z का आंसर 0 होना चाहिए, will because be tan zero inverse of yeah which number is 0? Tan inverse of 0 is 0, zero is zero yeah which means imaginary part of z is 0. yeah But what are they saying? That imaginary part is k, where k is not 0. K is not Also, zero the exact ulta है, this is false. So actually yes the equation has to be imaginary part of z minus z1 upon z2 minus z1 equal to 0. That is the equation. hmm.